Hello students, welcome to my channel Gateway to Biology. आजिर टॉपिक अछि 2022 रा क्वेश्चन देखिबो पिला माने तमन का केबे केबे सेट भी पड़े जेमति कि ए बी सी सेट पड़े आ ए जो क्वेश्चन तुमको दिया जाय छी स्टार्टिंग रो चेक करनबो एग्जाम रे जते बळे पढुछि 24 पेज जदी देछि ताल 24 पेज कंप्लीटली अछि कि नै आ पछरे कहले कोन से पिला सुनिबे नाही कि टीचर माने भी सुनिबेनी तो से मार्क करदेव कि जी पेज लिखा जाटा पेज अच्छे कि ना स्टार्टिंग रू तुम रोल नंबर लिखिदेव जहाद्वारा क्वेश्चन हजिबार चांसेस नहीं कि कौन एक्सचेंज करवा सब जिनस तुम दूरे की रही पार सहित एक्चुअल एक्स रेगुलर एंड रेगुलर स्टूडेंट मान सेम क्वेश्चन होता है समटाइम्स डिफरेंट क्वेश्चन होता है जदि सिलेबस रिड्यूस्ड होती सिलेबस चेंज होती ओके 2022 रा क्वेश्चन फिजिक्स रे कौन थिला देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन कौन अछि तो फर्स्ट क्वेश्चन तमर जेमति कि जानिछो कि एबे क्वेश्चन तमर एमसीक्यू टाइप ही पड़िबो ऑलरेडी कहा जायछि सिलेक्शन पैटर्न जो क्वेश्चन पैटर्न भी दिया जायछि सेथिरे भी आ सिलेक्शन क्वेश्चन भी म तमन को कहिछि सब क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न रे पड़िबो तो एबे देखिबा हमर फर्स्ट क्वेश्चन कौन अछि क्वेश्चन दिछि चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ 4 probabilities are given at the end of each bit और सितरे फर्स्ट क्वेश्चन कौन अछि देखो एरे क्वेश्चन अछि द फेज डिफरेंस बिटवीन alternating EMF and current in purely inductive circuit each dash यदि alternate ए क्वेश्चन लो ऑप्शन आई रे अछि 0 देन पाई पाई बाय 2 देन पाई बाय 4 अछि और यार करेक्ट आंसर अब कोन ना थर्ड आई दैट इज पाई बाय 2 इज द करेक्ट आंसर ठीक सेमती बी क्वेश्चन रे कोन थिला द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डैश द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल और यार देखा ऑप्शन आई 2i थर्ड आई भी अच्छी आ यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन 2i दैट इज कोन हबो ना m0 l2 देन t0 देन a मने रखिबो पिला माने यार करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर समटाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो बेस करके माने सेही टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम रे पड़ी जाय माने बार बार जेंति किचअप्स लो आसला सेंति एमती किछि पार्ट अछि जोथरे बार बार रिपीट होछि तो सेति पे टारगेट रख कि 10 इयर्स रो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जिबा पई मोस्टली एमसीक्यू पाई मो तमन को कहूछि प्रीवियस 10 इयर्स मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा देखिबो सेही पार्ट हुई क्वेश्चन आ जायथो एमसीक्यू तुमको 90% क्वेश्चन ए 10 इयर्स क्वेश्चन ही आसे जेबो ओके तो क्वेश्चन नंबर सी रे देखा कोन दिछि द कंजर्वेशन प्रिंसिपल consistent with the Kirchhoff's voltage law each dash option each देखिबा correct answer कोन हबो ना option 2i that is conservation of energy is the correct answer तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना क्वेश्चन एक नंबर डी रे अछि the reactance x of an AC circuit containing pure capacitance C at frequency F is dash तो एठी जदी देखिबा हमें ए क्वेश्चन आंसर आज पर क्वेश्चन हमें जानि चंती xc इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा c जोथरे कि ओमेगा रे जदी रिजल्ट हमें देखिबा 2 पाई f तो सेही बेसिस रे यार करेक्ट आंसर कोन हबो पिला माने ना ऑप्शन 2i is the correct answer x equal to 1 by 2 pi fc is the correct answer ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए देखा 2 pi रे पिला माने ठीक से देखि दियो तो सेति पई नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा क्वेश्चन नंबर ई रे कोन अछि क्वेश्चन नंबर ई रे अछि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu of a medium where velocity of light is v and velocity c of the light in vacuum ताले करेक्ट आंसर आम पाखरे कोन हबो तो फर्स्ट जिंस मन रखिबो म्यू इक्वल्स टू केते ना वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ
मीडियम ओके मीडियम पिला तो से बेसिस रे हमें देखिबा यार करेक्ट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन 2i is the correct answer that is mu equals to c by v the next question देखिबा next question कोन अछि the color of light which undergoes minimum deviation in a prism each dash the minimum deviation in the prism रे कोठी होछि ना यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन आई that is red कांगे तमे माने जानिचो कि जो सूत्र अछि तमरा विगाइरो जो अछि सेही बेसिस रे ही एटा को करा जाईछि तो वेवलेंथ कहार अधिक अछि जोटा कि सबुत्र देखिबा जदी लैम्बडा आर अधिक अछि ओके तो जोथि पई कि यार वेवलेंथ बेसिस रे एटा को कहा जाउछि एफ आई इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी रे अछि द फेनोमेनन ऑफ लाइट responsible for dazzling of diamond each dash ऑप्शन आई रे अछि एठी कितु करेक्ट आंसर मो डायरेक्ट कहूची जेहेतु सबो क्वेश्चन ना यार भी करेक्ट आंसर डायरेक्ट कहूची कि ऑप्शन आई भी इज द करेक्ट आंसर दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके तो जहा को कहा जाय टी आई आर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एच रे देछि the power of a lens of focal length 20 centimeter is dash जदि the power of a lens अछि जार focal length अछि केते 25 centimeter ताहले यार करेक्ट आंसर कोन हबो आ यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन थर्ड ए दैट इज 4d इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि तो आई अछि आई रो क्वेश्चन अछि द लॉ ऑफ रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डैश यार करेक्ट आंसर कोन हबो ना कूलम्स लॉ इज द करेक्ट आंसर पिला माने मन रखिबो कूलम्स लॉ इज द करेक्ट आंसर आ ता सहित मते कमेंट बॉक्स रे निहाती जणेबो कि तमरो एग्जाम प्रिपरेशन केमती चलीची को सब्जेक्ट सबुटु अधिक तमर कंप्लीट हेची तो सेटा भी पिला माने जणेबो जदी वीडियो भलो लागु थाय त मो सहित इंटरेक्शन रे रहिबो बटनी रो जोलॉजी रो सबु चैप्टर प्रैक्टिस करिची वन टाइम रिवीजन हेची लास्ट टाइम रिवीजन क्लास आ ता सहित पीवाईक्यू जहां भी तमे बायोलॉजी रो वीडियो दरकार सबु अवेलेबल अछि ओके त नेक्स्ट जे नंबर देछि द electrostatic potential due to an electric dipole at distance r from its center is directly proportional to dash तो या करेक्ट आंसर कौन हबो पिला माने ना ऑप्शन 2 is the correct answer that is 1 by r square is the correct answer एठी मन रखिबो पिला माने जदि हम पाखरे v मागुची 2kp divided by r square हबो किंतु एई जगह रे जदि इलेक्ट्रिक पोल मागुची ओके इलेक्ट्रिक पोल जदि मागुची तो सेही अनुसार जदि सेही जगह रे इलेक्ट्रिक फील्ड मागिबो ओके इलेक्ट्रिक फील्ड जदि मागुची ताले एठी कोन हबो ना E equals to 2kp divided by r3 हबो ए क्वेश्चन को ए बेसिस रे मन रखिबो कि को पैटर्न रे क्वेश्चन पडिची त से आंसर हमकु आंसर लिखिबा को पडिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिछि केते के नंबर क्वेश्चन रे आसी पहुंचदी इफ द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट capacitor of capacitance C is doubled its capacitance becomes dash तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो ना 2C is the correct answer that is I is the correct answer पिला माने तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो क्वेश्चन नंबर ई या परे हमें कोठी आसी कि पहुंचलेनी ना एल क्वेश्चन रे पहुंचले एल रे दिछि दो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डैश माने डायरेक्ट क्वेश्चन अछि आ यार करेक्ट आंसर कोन हबो m l q बा 3 कहि परिबो t to the power minus 3 and a to the power minus 1 is the correct answer. That means option 2 is the correct answer. The next question देखिबो next question कोन अछि हमरो क्वेश्चन नंबर m रे पहुंचले पिला माने m रे अछि the SI unit of magnetic permeability
इज डैश ये देख पूरा डायरेक्ट वाला क्वेश्चन ता माने ये जिंस पई तुमको प्रैक्टिस दरकार प्रैक्टिस बार बार कले जेकी क्वेश्चन आंसर दे पारिबो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी और यार करेक्ट आंसर अब mu equals to tm divided by a. So the correct answer is option A is the correct answer. Next question देखिएगा n number question. The angle between an equipotential surface and electric line of force at a point is dash. So your correct answer कौन हबो ना 90 degree is the correct answer. Okay. The next देखिएगा next question कौन अछि ओ question अछि electric potential V and electric field intensity E are related as dash. ये जो V और E भितरे कौन अछि सेमानकर जो related कौन अछि और यार correct answer कौन हबो ना option 2 is the correct answer. E और V भितरे कौन related अछि. The next question देखो P number देछि the shape of magnetic lines of force due to an indefinite long straight current carrying wire is dash. Our your correct answer कौन हबो पिला माने ना 2 is the correct answer, that is circular. Circular is the correct answer. Okay, now next question देखो Q रे आसिकी पहुंचती और Q रे देखि the law which related the potential difference and electric current between 2 points in a conductor is dash. Option I rachi Coulomb's law, then Joule's law, then Ampere's law, then Ohm's law. Our correct answer Ohm's law is the correct answer. The next question dekho R dechi the SI unit of self inductance each dash. The SI unit of self inductance each dash. Our correct answer कौन हबो ना Henry is the correct answer, that is IV is the correct answer. The next देखा next अछि S number question आसिकी पहुंचिले the angle of magnetic dipole at the pole of the earth each dash. यार correct answer कौन हबो option 2 is the correct answer, that is 90. और next video रे इटी गोटे क्वेश्चन तमानको दोछि आ कमेंट बॉक्स रे निहाती मत जणेबो नेक्स्ट तमे को ईयर रो क्वेश्चन चाहुचो डिस्कशन करबा पई जो ईयर रे फटाफट कमेंट बॉक्स रे ड्रॉप करबो जोटा मैक्सिमम आसीबो सेटा से ईयर को ही प्रैक्टिस करबी. ओके तो नेक्स्ट देखो 3 नंबर क्वेश्चन है कोन अछि आज रो लास्ट क्वेश्चन भी फॉर एन अल्टरनेटिंग करेक्ट I equals sin omega t, the RMS value of the current is dash. और यार करेक्ट आंसर कौन हबो ना हमरो ऑप्शन थर्ड आई इज द करेक्ट आंसर. देखा इति थर्ड आई लिखि दोछि पिला माने ऑप्शन थर्ड आई इज द करेक्ट आंसर. आ छोटी की हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 रे अच्छी choose the correct answer out of the 4 probables given at the end of each bit. तो एठी देखिबा में क्वेश्चन नंबर ए रे कोन अछि क्वेश्चन नंबर ए अछि the average binding energy for nucleon is maximum for the nucleus of dash. एठी करेक्ट आंसर कोन हबो आयरन जोथरे कि हमें जानि चंती आयरन यार करेक्ट आंसर हबो आ आयरन मन रखिबो यार फार्मूला जो देखिबा Fe रो तो ता सहित मन रखिबो Fe रो एटॉमिक नंबर रहइबो 26 एंड एटॉमिक मास रहइबो 56. तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि ना नेक्स्ट क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नंबर बी रे the average life tau and half life t of a radioactive substance are related as dash. A tau and half life t रो रिलेशन कोन अछि तो एठी हमें देखिबा कि हमें जानि चंती कि tau जो अछि equals to t half and divided by ln2 जोथरे कि यदि हमर देखिबा t half equals to देखिबा that is tau into ln2 अछि. तो ए जो ln2 अछि तार अप्रोक्सीमेट वैल्यू होछि केते ना 0.693.
तो जोति पई कि हमर एठी करेक्ट आंसर कोन हबो ना करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन थर्ड आई दैट इज t equals to 0.693 tau. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएबो क्वेश्चन नंबर सी रे कोन अछि क्वेश्चन नंबर सी रे अछि द लॉजिक गेट having only one input is dash. एटी क्वेश्चन मागिची गेट रो टाइप ऊपर क्वेश्चन मागिची जोतरे की ओनली वन इनपुट जहार अछि त सेही कंडीशन को कोन कोहा जाय एठी करेक्ट आंसर कोन हबो ना नॉट होची करेक्ट आंसर तो कोन पे हमें नॉट को कहउचंती कहिना एही गोटे अछि गेट जोतरे की वन इनपुट अछि तो जोतरे की मन रखिबो इनपुट जेते बळे इनपुट जदि जेतेबेले जीरो रहइबो एटी लिखि दोछि पिला माने इनपुट जेतेबेले जीरो रहिबो सेतेबेले आउटपुट रहिबो 1 ठीक सेमती इनपुट जेतेबेले आम पाखरे रहिबो 1 सेतेबेले आउटपुट कोन रहिबो ना 0 ओके तो एटी मन रखिबो कि आउ जेते सारा गेट अछि समस्तकर मिनिमम केतोटी इनपुट थाई ना दुईटी इनपुट थाई ओनली गोटे अछि नॉट जहाँ पाखरे कोन अछि ओनली वन इनपुट अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द रिलेशन बिटवीन ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा एंड बीटा इज डैश तो एटी जो देछि क्वेश्चन रे क्वेश्चन नंबर डी रे जो देछि तो यारो रिलेशन देछि गोटे ट्रांजिस्टर आ गोटे कोन ना पैरामीटर ऑफ अल्फा एंड बीटा जरा करेक्ट आंसर हबो बीटा इक्वल्स टू एटी डायरेक्ट मो करेक्ट आंसर को टिक मार दोछि बीटा इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा हबो करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई देखिबा क्वेश्चन नंबर ई रे अछि द नंबर ऑफ diodes used in a half wave rectifier is dash दिछि the number of diode केतोटा diode आमे यूज कर परिबा गोटे हाफ वेव रेक्टिफायर आमे नॉर्मली जानि छथि जेते बेले गोटे वेव जाउची त नॉर्मली आमे ता देखिबा एम्प्टी टाइप रो वेव डायरेक्शन जाउची पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव नेगेटिव एम्प्टी जाउची जदि आमे सेटा को चाहू छथि कि ओनली हाफ वेव करिया पई आइदर से पॉजिटिव भी हे पारे बा सेही जगह रे जदि खाली नेगेटिव भी हे पारे ताले सेही जगह रे हमकु गोटे ही रेक्टिफायर यूज करबा को पड़िबो सो ऑप्शन 1 आई जो अछि 1 सेटा हबो हमर करेक्ट आंसर The next question देखो next question अछि F the approximate energy produced during the fusion of 4 hydrogen nuclei into 1 helium nucleus is dash कोन क्वेश्चन देछि पिला माने ना जेते बळे approximately energy केते प्रोड्यूस होछि को केते बळे ना फ्यूजन होछि जेते बळे 4 hydrogen nuclei into 1 helium रे तो एक्चुअली जदि बा में एठी देखुचंती एक्चुअल वैल्यू जदि देखिबा यार 26.7 MeV काहे के ना आमे नॉर्मली यार सूत्र जानि छथि E इक्वल्स टू mc² जोतरे के जो MeV अछि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स किंतु एई अप्रोक्सीमेट जेतला वैल्यू देखा जाउछि तो सेति पई एई वैल्यू रो ऑप्शन अनुसार आमे कोटा को चूज करिबा ना ऑप्शन थर्ड आई इज द करेक्ट आंसर किंतु अप्रोक्सीमेट कते कहली ना 26.7 MeV ओके तो जोटा कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट the next question देखा next question अछि the impedance Z at resonance of RLC circuit is dash तो এই क्वेश्चन देछि ए जो इंडिपेंडेंस जेड देछि रिजोनेंस एट रिजोनेंस कंडीशन ता मन रखेबो एट रिजोनेंस रे कोन होछि तो ए टाइप रो क्वेश्चन है फास्ट में मन रखेबो जेड इक्वल्स टू एक्चुअली केते ना रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस x0 स्क्वायर किंतु एट रिजोनेंस कंडीशन रे xl इक्वल्स टू xc
जोथि पई कि हमर z इक्वल्स टू कोन हबो ना r स्क्वायर रूट हबो दैट इज r. So correct answer कोन हबो ना z equals to r. Option I is the correct answer. Next question देखो ए क्वेश्चन रा नंबर मु देई दोछि पिला माने जोटा कि कटि जाईछि h हबो यार करेक्ट जो क्वेश्चन नंबर. This is the modulation producing minimum noise. तो को टाइप रो modulation produce करिवो minimum noise produce करिवो. तो एठी क्वेश्चन रे हमें देखिबा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जोटा को कहा जाउची एफएम तो जोटा कि हम पाखरे करेक्ट आंसर आबो. किंतु जदि देखिबा आजिका डेट रे ई जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अछि सेतिरा हमें देखुचंती जीरो नॉइज अछि किंतु आगोर जते बेले हमें रेडियो यूज करा जाउतला सेति जानचंती कोन ना एम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करा जाउतला जोथ पय कि बहुत सारा नॉइज देखा जाए आज कंपैरिजन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. सो करेक्ट आंसर अब ऑप्शन 2 द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर आई रे पहुंचीले क्वेश्चन नंबर आई रे देछि द डी ब्रोगली wavelengths lambda e and lambda p of electron and proton respectively moving with same speed are related as dash. तो कहा सहित रिलेटेड करा जायछि मन रखिबो ए जो डी ब्रोगले तार जो फार्मूला अछि फर्स्ट मन रखिबो लैम्बडा इक्वल्स टू h by p. ए p फॉर कोन ना मोमेंटम जो कंडीशन रे हमें कोन जानि छंती ना h डिवाइडेड बाय कोन हबो ना mv जहा फार्मूला वेलोसिटी जो अछि v इक्वल्स टू वेलोसिटी एंड m इक्वल्स टू मास अछि. ओके तो h होची हमर प्लैंक्स कांस्टेंट पिला माने जो कंडीशन रे हमें देखिबा कि त स्पीड जदी सेम हुए स्पीड जदी हम पाखरे सेम होची ताले हम पाखरे वेलोसिटी भी कोन रहइबो ना सेम रहइबो. त सेही कंडीशन अनुसार हमें कोन कहि परिबा ना m जदी कंडीशन लैम्बडा e इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय me ठीक सेमती लैम्बडा p इक्वल्स टू h to the power m p नबा ताले सेही कंडीशन देखिबा आज कंपैरिजन यार वैल्यू अधिका रहबा सेति पई हमर करेक्ट आंसर कोन हबो ना जो ए क्वेश्चन रे करेक्ट आंसर हबो iv जोटा कि लैम्बडा e अधिक रहइबो आज कंपैरिजन लैम्बडा p रे. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जेरा क्वेश्चन अछि व्हेन टेंपरेचर इंक्रीज टेम्परेचर जेतेबेले इंक्रीज होची द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीज और डिक्रीज. तो ए कंडीशन रे जेरो करेक्ट आंसर कोन हबो ना करेक्ट आंसर हबो हम पाखरे इंक्रीजेस. तो कोन पई इंक्रीज करछि पिला माने ना जदी उडे कंडीशन देखिबा तो हमर नॉर्मल कंडीशन देखिबा जोठी की वैलेंस बॉन्ड प्रेजेंट अछि तो से कंडीशन रे जेता टेम्परेचर इंक्रीज करूची से माने कोन ना गोटे कंडक्शन बैंड तयारी करछन जोथि पई कि हमर करेक्ट आंसर कोन हबो ना इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर. तो ता सहित नेक्स्ट क्वेश्चन देबा क्वेश्चन नंबर के रे दिछि इफ a is the fast bore radius in hydrogen atom then the radius of the third orbit is dash. तो इठी बहुत सिंपल फार्मूला डायरेक्ट पकेबार अछि बोर्स रेडियस फार्मूला पकेबार अछि रेडियस फार्मूला जो कंडीशन रे तमे कोन देखिबो ना r n इक्वल्स टू n स्क्वायर तो a 0 जोतरे की r n कोन ना 3 अछि तो एठी जदी 3 अछि ताले 3 रो स्क्वायर नै गले एंड a जोतरे की आंसर कोन आसीबो ना 9a जोति पई कि हमर करेक्ट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन थर्ड आई इज द करेक्ट आंसर दैट इज 9a. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि
The next question achi, the focal length of a biconvex lens with ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା refractive index 1.5 and radius of the arc on both side each dash. So एठी ଆମ ପାଖରେ correct answer କ'ଣ ହବ ନା R is the correct answer. जोथिरे कि next question देखिबा question number M को छिबा. Question number M रे कोन अछि in young double slit experiment if the wavelength of light is doubled then जदि wavelength of light double हो जाउछि then the fringe width will be dash. तो एठी कोन correct answer हबो ना correct answer हबो हमरो doubled. कोन पई ना आमे जानि चंती beta equals to lambda d divided by d small d जोथरे कि lambda equals to इटे डायरेक्ट मु लिखि दोछि कि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्बडा जोथि पई कि यदि एटा इंक्रीज होछि तले एटा भी इंक्रीज होबो जोथि पई कि यार करेक्ट आंसर कोन हबो डबल्ड. The next question देखो question number 8 the angular momentum of electron in second stationary orbit of hydrogen atom is dash. तो आमे जानि चंती कि यार करेक्ट आंसर कोन हबो ना h by lambda is the correct answer. H equals to Planck's constant मने रखिबो. Planck's constant. तो देखो next question आउ आजिरो last question भी question अछि the shape of graph between maximum kinetic energy of photoelectron and frequency of incient radiation is dash. The correct answer कोन हबो ना straight line is the correct answer. जेते सारा MCQ थिला सबु क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करछथि देन ग्रुप बी रे देखा क्वेश्चन जेतरे कि 10 टी क्वेश्चन पडिबो तमरो 2 मार्क्स क्वेश्चन पडिछि 2022 रे क्वेश्चन पिला माने द नेक्स्ट हमें देखिबा कि लॉन्ग क्वेश्चन भी पडिछि देन 2 मार्क्स क्वेश्चन परे नेक्स्ट हमर को टाइप रो क्वेश्चन पडिछि भी चेक करिनियो. ग्रुप सी आसुछि जोथरे कि 5 into 3 क्वेश्चन करया को पड़िबो किंतु क्वेश्चन तम पाखरे एमती गोटे दुईटा तीनटा देन चारटा पांचटा छटा क्वेश्चन थिबो ता भी तो तुमको तीनटा चूज करके करबा को पड़िबो कोनसी और भी नथिला 2022 रे. ओके आज रो क्वेश्चन प्रैक्टिस एठी रखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस रा आ गोटे ईयर रो क्वेश्चन प्रैक्टिस